सचिन जी, सपोजिंग यू आर माई क्लाइंट और अ प्रॉस्पेक्ट, आई वुड से क्या आप मुझे महीने में एक लंच करा सकते हैं? उसके बदले में मैं आपके परिवार को 1 करोड़ रुपया आपके बाद दे दूंगा. They had a very, I would call it, apt sales process. They followed a sales process called as पाप से डर. पाप से डर. PAPSDR. So PAPSDR. What to do with the prospect? The first thing they go and say, "ए मेरे से एक पॉलिसी ले." क्यों? अच्छा, आई एम सेइंग उल्टा, यही क्यों लूं? अच्छा चलो लेता हूं, तो कौन सा लूं? When I started, I was short of crying on the first day when I did this for myself, and that is when I felt that this is important from the knowledge point of view, this is important from awareness point of view, this is important from the sales point of view. So my mother used to say, अरे सिर दुख रहा है क्रोसिन ले ले, पेट दुख रहा है क्रोसिन ले लो. अभी थोड़ा टाइम चेंज हो गया, अभी डिकोल टोटल आ गया, ठीक है? So now insurance advisors unfortunately are doing decol total theory. कुछ भी हो गया, उन्होंने एक प्रोडक्ट फाइनलाइज कर दिया है कि आई एम गोइंग टू सेल दिस प्रोडक्ट बिकॉज इट गिव्स मी से 35%, 45%, व्हाटएवर. मैं यही बेचूंगा या मैं यही बेचूंगी. दैट्स हैविंग अ मेडिक्लेम एंड हैविंग एडिक्वेट मेडिक्लेम आर टू डिफरेंट थिंग्स. फर्स्ट थिंग आई वुड ऑलवेज सजेस्ट इज टू टेक अ टर्म इंश्योरेंस. बाकी कुछ जिंदगी में नहीं ले सके तो टर्म इंश्योरेंस जरूर. Hello everyone and welcome to our podcast. Like always, we have an expert in financial field today to share his wisdom. Mr. Sudeep Naik is here with us today. From Mumbai, Amchi, Mumbai, and I had a privilege to meet him in person, and I must tell you that he is a master salesman. He can really strategize sales plans so fluently and so amazingly. So I had a very long interaction when I have met him personally. So I'm looking forward for some tips, tricks and strategies to come out, especially in terms of financial product selling. And I'm sure all the audiences today would be going a little richer in terms of the knowledge about how to actually be a better advisor, or how to be a professional advisor, and how to actually grow your business 10x, especially the financial practice part. So I welcome sir, and it's a pleasure to have you. Namaskar sir. Yes. First and very important question for the audience to know how you got into this field. This is I know it is an interesting story, so I'm asking you. Yeah, it's a very interesting story. I was never meant to be in insurance because somehow we have this all as a Maharashtrian family. We have this notion insurance में नहीं जाना है, sales में नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है. The last thing we could do is doing insurance. That is what the unfortunate notion is. So I was a teacher. I mean, I used to run a coaching class, and my father-in-law was working then with Max Life Insurance as an agency associate. So he wanted his daughter and my wife to be his agent, and she agreed also. And all those things were then. And then in those days we have to do 14 days of training. So she had put an application in her office that I need a leave and all of that, and she had agreed to do that course. And tomorrow is going to be the day when she's supposed to start with the training session and all. And tonight she says, I'm not going. I don't want to do it. And my father-in-law was in total fix. Now, since this mess was created by my wife, as a good husband, I had to take the onus. So my father-in-law was, because she is the only daughter, so my father-in-law was little, अब इसको बोले क्या करे क्या, खून तो अपना ही है, खून भी नहीं कर सकते. But then I could make out that he's very uncomfortable because he had to get one recruitment done. Okay. So my thought process was, so I went up to him and told him, instead of her, can I attend it? But I said, I cannot do 14 days because I cannot miss my coaching class for 14 days. 7 days is something which I can, a week off I can do. So he was like, okay, I'll put you in the internet online batch and all, and you can do it. So 7 days what I agreed to. Okay? And I told him that those first 5 policies also I'll give you, but you will not ask anything beyond that. So this 7 days of training and 5 policies is my commitment to you. I will do it. मैं किधर से लाया, क्या किया, कितना पैसा भरा, ये कोई पूछेगा नहीं, और आगे का भी कुछ धंधे का बात करेगा नहीं. Your job will be done, my job is done. My wife has created this mess, I'll sort it out. And that is how next day I went and attended
ठीक है, मेरा वो रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं, पर मैं जाके आई वेंट एंड सेट इन द ट्रेनिंग सेमिनार. द क्रेडिट गोज टू मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ. देन इट वाज मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ. Okay, yes. With all the New York Life expertise of, this is way back in 2008. With all the expertise that Max Life had in those days, New York Life had a very rich experience. Because they'd seen the two world wars, they had seen the Great Depression of 1928, and then still survived the insurance market. So they were very, and all with all those professional approach towards insurance, and I found it very nice. They taught us, I mean, what attracted me to this field was, I'll tell you that. In my first training session, the whole day, I think it was around from 9 to 5 in the evening. That first day they did not speak a single word about Max New York Life. Neither about Max Life, nor did it speak about New York Life. Which was completely unexpected for you. 100%. Now I am going to a company and nobody is talking about a company. Yes. The only thing they spoke about was they started with I for insurance. Okay. And that turned the table. I had not only attended those 7 days, but I also completed 14 days sitting in that training center from 9 to 5 in the evening. And as a result, I became a very good. The training was the foundation of my entry into this career. I started liking more of this insurance field, more of the financial sector than my education sector. And slowly in 2010, I came to a junction where I had to choose between my coaching class and insurance. So I chose insurance, and that is how SNFS, my company, was formed. Because I have been a strong follower of this insurance training part, I precisely took to whatever were the main parts. So the essence of this whole game is basically this financial planning only, the goal setting thing. If that is done in place, you will never go wrong as an insurance advisor. So that's in the bottom line how I got into this field. And then, of course, when you get into insurance, then there are others also who keep on asking. There were Fullerton was the first company who approached. Then back those days they were doing personal loan, and Barclays was there. So these were the two agencies that approached me, or rather, it's like cross-selling the life advisors. They will give something like today we give life advisors the non-life things or general insurance thing or health insurance agencies. They're similarly pattern. They also followed. They were giving loan agencies to insurance advisors. And since there were no exams and all, we only had to sourcing was very good. So we had to cross it. So I took up. So my entry into insurance was by chance, but then my entry into the other avenues of financial sector was by choice. Okay, so I think you should be thankful to your better half. I am still. Because you were destined for financial profession, I feel, and you are doing a fantastic job. Today, whenever I go to any platform, I don't forget to mention his name. Today also I did it. Because everybody will ask me this question, and I have no regrets about joining insurance. Yes. In fact, sir, very interesting thing here. You were an educator before. Okay. And an advisor, has to have learning as a very important part of his career, his or her career, right? I mean, on that note, you were an educator, so education came to you naturally. I know that you undergo a lot of trainings. You put yourself into a lot of new learning and upgradation. But as a fellow advisor of the community of financial advisors, what you advise or what do you advise to the other advisors who probably don't value education that much in this industry, because it's very important? And it's a very simple one-line statement. You have to be a student and educator both. If you want to be it into any field, you have to be a student first. Keep your mind open to learn new things. I still attend, as you said, a lot of training seminars. Now I'm not working with Max Life anymore. I am now with LIC of India. But today also, whenever there is any workshop, I go and sit. Even if I know there would be something that somebody would add to my knowledge base. There is something I could contribute. So you have to keep your learning potential open, and you have to take more, because it's a very dynamic field. It keeps on changing. There are new regulations that comes up. There are something that goes out. So something will become obsolete, something will come new. So you have to be in that particular frame and updated. Secondly, it's all about educating
the clients also, or or your even fellow advisors also. I know something, and if I have to, if I could pass on this information to somebody, it will enhance only. जब आप और मैं कुछ डिस्कस करेंगे तो बेहतरीन चीजें आने वाली, थोड़ा आपका थोड़ा हमारा मिलके कुछ दोनों का नॉलेज बेस बढ़ने वाला. So that's a very crucial thing. So I would advise to everybody, all the new ones and seniors को तो मैं, I'm sure they must be doing it. You have to be updated, so you have to be an educator also, and you have to be a student also. Both these things, both these roles are equally important. Yeah, fantastic, Bola. You have to play both these roles. Yeah. An educator to your client and a student for your own fraternity or on your profession. Yeah, absolutely. Because you have to keep learning and that upgrading yourself. Because aajkal customers also are quite aware. Customers today probably know a thing or one more than a lot of other normal advisors as well. So as a professional advisor, you need to have answers and a strong explanation to the queries that the queries and questions that your clients asked. And I agree with you, fully agree with you. And you also mentioned, sir, that goal planning. You just mentioned just some time back that goal planning is something that you really focus upon. Okay, lot of advisors are doing goal planning, and they are also speaking about the approach part of it. Like once you go for educating your client about their financial goals and then try to offer solutions to achieve those goals. I mean, the whole approach is different, which clients also appreciate. So, I mean, what is your opinion on that? How do you just explain this? Like, I just want a little detailed explanation on the goal planning part. Now, as I said, when I got converted into an insurance advisor because of Max Life or Max New York Life. They had a very what do you call it, apt sales process. They followed a sales process called as PAP Se Dar. PAP Se Dar. PAPSDR. Okay. So PAPSDR stands for P stands for prospecting, A stands for approach, next P stands for problem identification, S stands for solution delivery, D stands for doubt, and D stands for decision making, and R stands for reference. So this has been the basis of all the businesses that I've done till date. Oh, fantastic. Okay. So basically, whatever prospecting so everybody knows how to prospect. So I'm not going to deal more into how to prospect and all. Everybody knows there are enough of material on the internet also. And I'm sure every insurance advisor, when he attends the training, they are going to teach him, ye list nikalo, chacha ko, mama ko, kaka ko, sabko, your friends, your relatives, everybody. So people know how to prospect. The problem is what to do with the prospect. The first thing they go and say, hey, mere se ek policy le. क्यों? अच्छा, I am saying उल्टा, यही क्यों लूं? अच्छा चलो लेता हूं तो कौन सा लूं? Not because I am going to get a 35% margin on some traditional policies, so I should sell that policy. If Sachin needs this policy, I will sell him. So a financial planning or a goal setting or a problem identification is very, 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 very important. Once you do that, everything is sorted. It's like an eye opener to to the client himself. Now, when I was a student, when I started, or even when I take to train my new joinees or whoever, when I started, I was short of crying on the first day when I did this for myself. And that is when I felt that this is important from the knowledge point of view, this is important from awareness point of view, this is important from the sales point of view. So my fellow advisors should remember this thing categorically कि आपको problem identification पहला करना है. हर एक को जीवन लाभ नहीं देते, हर एक को जीवन उमंग नहीं देते, जीवन उत्सव नहीं देते. जिसको जो जरूरत है वो दीजिए. अगर किसी को यूलिप लगता है या किसी को टर्म लगता है तो उसको टर्म ही देना चाहिए. ठीक है. So that's the important, and once you identify the problem, then you know what the solution should be. देखिए कैसा होता है कि जनरल जब मैं छोटा था, my mother used to say, अरे सिर दुख रहा है क्रोसिन ले ले, पेट दुख रहा है क्रोसिन ले लो. अभी थोड़ा टाइम चेंज हो गया, अभी डिकोल टोटल आ गया. ठीक है. So now insurance advisors unfortunately are doing decold total theory. कुछ भी हो गया decold total. उन्होंने एक प्रोडक्ट फाइनलाइज कर दिया है कि I am going to sell this product because it gives me say 35%, 45%, whatever. मैं यही बेचूंगा या मैं यही बेचूंगी.
दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू डू। और ये चीज आपको उस वक्त फायदा देगा, बट इन द लॉन्ग रन इट विल हेल्प नॉट हेल्प एट ऑल। इट इनफैक्ट इट विल किल योर डेटाबेस, kill your client base. So if you now it is up to you us to decide whether we want to do this long term. And for 16 years now I have sustained in this industries because I've never mis-sold. I've not done any. In fact, I have never sold a product only. I have always sold the concept and the story. It is और एक important है. When you deliver solution, it has to be at the deep. The next day तुमने आपने देखा जो वो आपने solution deliver कर दिया है. अभी उनको सोचने दीजिए उनको क्या करना है. So if it is a yes, check is picked up. But अगर if it's no, then there no as in there would be objections. Then we need to sort out those objections. We need to overcome the objection. Maybe sometimes there is a notion fixed कि ये insurance advisor आया तो ये साला कुछ बेचने को ही आया. इसका मैं कुछ भी हो जाए नहीं लूंगा. And ये कुछ भी हो जाए नहीं लूंगा could be overcome only by this problem identification tool. There was हमारा जिंदगी गया पेपर पे लिख के निकालने को. Now there are tools available in the market which I think it's a great source to. I use tools today. Yes, in fact आपने बहुत boldly accept किया कि बहुत से एडवाइजर्स जैसे बोला डीकोल्ड एक ही प्रोडक्ट चिपका देते हैं. Their intentions are very clear and I am very glad that you are boldly accepting this because change will come only when we start accepting it as a fraternity, as advising fraternity that change has to happen now. You have to identify the problem and start solving solutions. Yes. And as a consultant, as a solicitor, because insurance is a matter of solicitation, so you have to go and consult. You have to educate your client. So when that is there, you should never be going with a pre-decided notion that मैं यही बेच के रहूंगा. You have to understand. आज मैं उसको जीवन उमंग बेच के आऊंगा. Yes sir. Correct. Yes. So and this is people, very when important. we go, और आपने सर boldly ये accept किया और openly लाया and I am very glad that it has come up because change will come from acceptance of this. And in a short statement I would say don't sell or don't push sell financial product, instead sell financial solutions for the financial goals of your client. That's what is important today, right? So I one important thing also that I wanted to actually specifically ask. I was very curious when we were doing a little research about you. You do offer something called credit repair services. So this is quite a unique thing. I'm just inquisitive to know what is it. See, basically how I come up with that thing, I'll tell you first. What prompted me to do is because I am always into problem identification and solution delivery. Okay, so as I said, then when we started off with loan agencies, a lot of people then used to get loan. कुछ problem नहीं था. Then this CIBIL thing came up. Okay, and because of some purana, which sometimes people are not aware also, some old stuff which is lingering in the past. Some mess they have done unknowingly, knowingly, without knowing the repercussions, they have done it. And then now it has affected the credit so adversely that they are not able to get any secured or unsecured finance. So a lot of people have come to me as we keep on doing sources. There are rejections more and acceptance lows. The only reason is because of the credit score. So we designed the product in such a way that we will repair your credit. People are more willing to do it. बताओ सर हम करेंगे, लेकिन क्या करना है किसको मालूम नहीं. So because now I'll tell you, if I have to tell you, there is a 15 साल पुराना credit card का 1000 रुपया का default, let's say, which you are not aware. You bought a car. I'll give one example. You bought a car, say from ICICI bank loan in 2010. Okay? Now at that back then they must have signed 100 documents and they must have given you one credit card which you may have used or you may not have used also. You are not aware also that such a thing exists. Now because of that, the annual charges, 1000 rupiah has been built up, and that 1000 rupees now today after 14 years it has become say maybe 25,000 of charges, and you are in a state where मैंने तो कभी ICICI का credit card लिया ही नहीं था, ये fraud है, ये है, वो है, I'm not going to pay. With a very typical Indian approach. मैं नहीं करूँगा, मैंने नहीं किया, मैं नहीं करूँगा, which is fair enough. So now you want a home loan. बैंक को छोड़ेगा नहीं. बैंक तुम्हारा बोलेंगे 2 कपड़ा है तुम्हारे पास पैर में, वो बोलेगा वो भी लेके आओ. बैंक कुछ छोड़ता नहीं कभी भी. बैंक कुछ भी नहीं छोड़ेगा. So bank will keep it as it is because it is whose father was. रिकॉर्ड में रहेगा ही रहेगा वो. उसके रिकॉर्ड में रहेगा. Now what happens is goes from the branch to the home branch or maybe home branch to the head office.
head office to the collection team to where? So as long as it's traceable in the system, you can rectify it. हमको मालूम है चलो हमारा भी होम लोन 1 करोड़ का नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस 25,000 का बैकलॉग, तो हम क्या सोचते हैं चलो ठीक है 25,000 भर के ये मैटर सेटल कर देंगे, एनडीसी दे देंगे एंड वी आर डन, वी आर गुड टू गो। किसको जाके अभी मैं क्या है नॉर्मल सिचुएशन में किधर जाऊंगा, आईसीआईसीआई बैंक ब्रांच में, सर दिस इज व्हाट इट इज शोइंग, आई एम रेडी टू पे दिस 25,000, ओके ही विल आल्सो हैप्पीली टेक इट, एंटर मारेगा, देखेगा अरे नहीं है, देयर इज नो ओवरड्यू, नथिंग इज देयर, नथिंग इज शोइंग इन द सिस्टम, यू डू वन थिंग, यू टॉक टू दिस डिपार्टमेंट, सो दे राइट अ मेल, ये वो, उसमें टाइम पास हो जाता है, नहीं हो, बिकॉज इट इज नॉट इन देयर बुक्स ओनली नाउ, सो बुक्स में नहीं है, सिस्टम में नहीं है, तो फिर रेक्टिफिकेशन कैसे करें, ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम होने लगा। फिर हमने इसमें डीप डाइव किया क्या कर सकते हैं, देन वी डिजाइन अ प्रोडक्ट कि वी विल फाइंड इट आउट, वी विल टेक 45-60 days, but we will go to and rectify your credit. Of course, they have to pay. Maybe may not be. We also argue on the point from the side of the customer that it has been, you have been purposely keeping him in the dark and no increasing your book. So we want to settle it, or we want to clear it off, but not at this cost also. We also try to reduce it. उसका भी penalty उसको लगना मांगता है, और at the same time they also have to get out of it, and we take a clearance. And so far we have been doing around roughly say maybe 54-55 cases that we have cleared their credit scores. Fantastic. And so this is the whole idea. I mean, if you go and search on your own, things will be difficult. You will not maybe able to sort it out. An ordinary person will be lost. Yeah, lost because they don't know when lost हो जाता है, motivation निकल जाता है, and this is where advisor plays an important role. Yeah. It is exactly like when you are in a crisis. Sometimes handling your the emotional quotient is very important. बहुत से लोग give up कर देते हैं, basically you have your own, see you will go to your job, you will have a family to take care. Yes. You have a 9 to 6 job, and those call center people or those back-end people will also work 9 to 6. So when will you go and settle it? And if they call you there, or you have to go to somebody and meet somebody, who is going to go? So all that is there. There is some mail budget to be done. Who's going to do it? So that way you need a consultant. जो लोगों का ये नोशन है कंसल्टेंट आया तो अपने को उसका फी देना पड़ेगा, लेकिन वो फी किसका है? फी तुम्हारा कंफर्ट का फी है, तुम्हारा उसका नॉलेज का फी है, उसका whatever the problem solution का उसका फी है. It will take time to have things change in India, but it is changing positively. आप उसको वो solution करवा, you are able to give that solution to them, to your clients, because of so many years of experience of yours. You have acquired those solutions. You have acquired that expertise after so many years of your own hard work and investment. I mean, and you're giving it to someone, in the most easiest way, served on a platter, and people have to pay for that platter. I mean, you're right. The mindset is changing. और एडवाइजर का इम्पोर्टेंस आपने बोला एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज. लॉट ऑफ पीपल आर केपेबल इनफ टू एक्वायर any knowledge. उनको अगर कल इन्वेस्टमेंट में जाना है, they can also do a study, and they are capable enough to acquire knowledge and do investment on their own. Same thing with studying an insurance policy. They can study the insurance policy and they can make a choice. But आपने एक बात बोला कि you are busy. Buying जब करते हो तब ठीक है, आप थोड़ा बैठ के शाम को रिसर्च करोगे. और आपने बोला कि जब कुछ अटक जाता है, सपोज से कुछ क्लेम आ जाता है, तब आपको आपका काम धंधा छोड़कर पूरा जाना पड़ेगा और खुद सॉल्व करना पड़ेगा. और बहुत बार आप अटक जाओगे वहां पर. मैं आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करता हूँ, जस्ट टू कंटिन्यू विद योर पॉइंट. सचिन जी खुद आप भी रिसर्च कर सकते हैं, आप सब कुछ करेंगे, यू टेक दिस पॉलिसी दैट पॉलिसी, यू कंपेयर ऑल द फीचर्स, यू विल मेक योर ओन प्रोडक्ट, एवरीथिंग. एनीबॉडी, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, एवरीबॉडी कैन डू इट. आपका क्लेम आते वक्त उसको सर्विस कौन करेगा? खुद का क्लेम. इनफ मटेरियल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट नाउ, इनफ साइट्स दैट गिव यू लॉट ऑफ ऑप्शन. ठीक है, यू कैन गो एंड बाय एंड ऑल do all those things from there, but what about the service part? You're going to do that service thing, and service and claim. The whole idea about insurance is who's going to settle the claim. So you need somebody to settle the claim, and that is why this advisor is there. That is why the consultant is needed. So somebody has to settle the claim and settle it in a correct way. So ये मत सोचिए कि
2% मेरा उधर सेव हो रहा है इंटरनेट पे लेने को, वो बेच के चला जाएगा। कल को जब उसका मेन पार्ट है उसका क्लेम सेटलमेंट, हु इज गोइंग टू डू द क्लेम सेटलमेंट इन इंश्योरेंस? और एडवाइजर विल ओनली डू इट। तो एडवाइस बाकी सब नहीं आएंगे, कोई भी एग्रीगेटर आने वाला नहीं है, आएगा सिर्फ एडवाइजर फॉर्म, क्लेम फॉर्म लेके। आपके बीवी के पास सिर्फ एडवाइजर आता है क्लेम फॉर्म लेके। आई हैव डन 3 claims and after I did the first claim I became an insurance advisor in the true sense। जब मेरे को समझा कि ये चेक देने का उसको मतलब क्या है कि बीवी को, तब मैं जाके इंश्योरेंस एडवाइजर बना। नहीं तो मेरे को लगता था ये कमीशन मिलेगा, मज्जानी लाइफ। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ वेरी सीरियस प्रोफेशन एंड इट हैज टू बी डन वेरी रिस्पॉन्सिबली। ट्रू सर, इनफैक्ट ये आपने सही बोला, एंड इट्स अ वेरी गुड एडवाइस to all the audiences that are listening. Yes, you are capable of finalizing a product, studying a product, but you need an advisor, a trusted advisor, a professional advisor to be there standing with you and with your family in the situation of crisis. And like this sir कि आप जाके रिसर्च करिए, आप जाके सब पैरामीटर्स, सब फीचर्स चेक करिए, एंड देन आस्क योर कंसल्टेंट कि मुझे यही लेना है, तू मेरे को मत सिखा। मे बी डिस्कस विद द कंसल्टेंट की pros and cons of a product or of features of a particular company is available here. Now these days you get a lot of online material also to do that. But hire a consultant. And the best part is you don't have to pay him separately. That has been taken care of. Sir, a professional advisor, I strongly believe that will still have some or the other value addition to give you. आप कितना भी research करोगे, वो research आप cannot replace with the experience. सर जो बंदा सुबह शाम, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक वही चीज करता है, उसके पास 2 पॉइंट तो ज्यादा होगा ना बताने के लिए। एब्सोल्युटली, और उसका एक्सपीरियंस है ना सर, उन्होंने देखा है लाइफ कैसे होता है। यू नो यू आर एब्सोल्युटली राइट। ऑन दैट नोट ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है लाइफ इंश्योरेंस में, टर्म इंश्योरेंस, यू नो व्हिच इज टुडे नो लाइमलाइट में नहीं है। देयर आर अदर प्रोडक्ट्स व्हिच आर इन लाइमलाइट। ओके, टर्म इंश्योरेंस का एक खास इंपॉर्टेंस है सबके लाइफ में। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर सर, आप थोड़ा उस पर हाईलाइट करोगे? देखिए सर, मैं टर्म इंश्योरेंस का बहुत बड़ा भक्त है। द फर्स्ट थिंग आई वुड ऑलवेज सजेस्ट इज टू टेक अ टर्म इंश्योरेंस। बाकी कुछ जिंदगी में नहीं ले सके तो टर्म इंश्योरेंस जरूर लो। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द सम पीपल, बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट और द फाइनेंशियल ग्रेड, somehow they could not get the term insurance, then we can think about other options to cover the sum assured part. टर्म इंश्योरेंस ये ऐसा चीज है, एडवाइजर्स को मैं खास करके बोलूंगा, अगर I think most of them would be advisors who will be watching this show. Advisors को मैं एक जनरल पिच में बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। सचिन जी, सपोजिंग यू आर माई क्लाइंट और अ प्रोस्पेक्ट, आई वुड से क्या आप मुझे महीने में एक लंच करा सकते हैं? उसके बदले में मैं आपके परिवार को 1 करोड़ रुपए आपके बाद दे दूंगा, हर महीना मुझे एक लंच कराने का। फैंटास्टिक, राइट, दैट्स द ओनली पिच वी डू। मुझे खाना खिलाओगे क्या? महीने में एक बार पुण्य का काम है, उस पुण्य के बदले आप जाने के बाद आपके परिवार को मैं 1 करोड़ रुपया दे दूंगा। सिंपल है सर, ये बाकी सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा टिप है सर, बिकॉज आप उसको समझा रहे हो वेरी वेरी सिंपल वे कि ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और एज इजी एज just having a lunch with your friend. We walk in the restaurant every other day, sir. Yes. Every other day. बिना प्रायोरिटी नहीं है। और इंश्योरेंस का प्रायोरिटी नहीं है, बाकी सब प्रायोरिटी है। सब करेंगे, 4 कलीग्स बोलेंगे तो जाएंगे, बैठेंगे, सब हो जाएगा। उसका बिल कितना आएगा? कंट्रीब्यूशन में भी अगर करेंगे तो भी वो प्रीमियम से कम ही आ रहा है। और ये राइट, लोग क्या बोलते हैं, अरे मैं नहीं मरा तो, अरे नहीं मरा, गॉड ब्लेस यू विद होल लाइफ, तब हम होल लाइफ पॉलिसी लेंगे। लेकिन आज जिम्मेदारियों का जो बात है, ऐसा समझो कि ये जिम्मेदारी, इतना सा पैसा देके कोई तो खरीद रहा है तुम्हारा जिम्मेदारी। ह्यूमंस आर नॉट रिप्लेसेबल। इमोशनल लॉस को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन्स को हम कम कर सकते हैं विद अ टर्म प्लान। इट इज द मोस्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड दैट इज वाई नॉट एवरीबडी गेट्स इट ऑल्सो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक को नहीं मिलता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ओनली अ प्रिविलेज फ्यू गेट इट। तो ये बहुत जरूरी है, अगर आपको टर्म प्लान मिल रहा है, आप कैसे भी करो कंपेयर, उस जिस भी कंपनी से लो, उसका क्लेम सेटलमेंट देख के यू शुड गो अहेड विद द टर्म प्लान। इट इज अ मस्ट हैव। इफ देयर इज ओनली, इफ यू आस्क मी, अगर मैं एक ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदूंगा तो मैं बोलूंगा आप टर्म प्लान खरीद, बाकी मर्जी आप। इनफैक्ट आप लोन में भी हो तो बहुत सारा, मेरे को मतलब वन पर्सन वाज एक्सप्लेनिंग मी दिस इंटरेस्टिंग केस। हाउसिंग लोन लिया हुआ है, ओके,
यंग मैरिड विद अ किड, हाउसिंग लोन लिया था, नया नया घर, हैप्पी था, थोड़े दिन के बाद टर्म प्लान तो लिया नहीं था अनफॉर्चुनेटली। अभी ही इज नो मोर। सिचुएशन ऐसा है कि उसकी फैमिली को वो घर भी छोड़ना पड़ा, होता है ना। नॉट इन पोजीशन टू, सो घर भी नहीं है, आगे का कुछ आगे का कुछ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी नहीं है। ये आपको मैं एक चीज सिचुएशन बताऊं देखिए क्या, आप। हमें हाँ, आज जो अपना फैमिली, आज मेरा फैमिली, आपका फैमिली, या किसी का भी फैमिली जो प्रिविलेज में है या जो लाइफस्टाइल जी रहा है, इट इज कमिंग एट वन कॉस्ट, and that और सर, cost borne by the breadwinner of the house, maybe a male or a female, whoever. yes. और Or सर, yeah, ये both of केस them में are ना, doing it together. ये केस में ना बहुत इंटरेस्टिंग बात था, whoever was telling me कि ये बंदा आईफोन लेके घूमता था, बड़ा आईफोन भी वो ईएमआई पे लिया था, और एक बड़ा गाड़ी भी था ईएमआई पर। ओके, हाउस वाज अ रिक्वायरमेंट, आई विल से टेकिंग दैट ईएमआई इज स्टिल गुड, बट बिफोर प्रायोरिटाइजिंग अ आईफोन, प्रॉब्ली अ टर्म इंश्योरेंस वुड हैव चेंज्ड द एंटायर फ्यूचर ऑफ हिज फैमिली, एंड उसका रिस्पांसिबिलिटी तो निभा पाता हो, फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी। आई मीन बेसिकली आपको मैं बोलूं तो देर आर 5 important पैरामीटर्स और 5 important प्रोडक्ट्स विच यू शुड हैव। इसको पंचशील बोलता है, इसको शील्ड प्रोडक्ट बोलता है। दैट्स अ शील्ड टू योर लोन। फर्स्ट वन इज अ टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। सेकंड वन इज अ हेल्थ इंश्योरेंस, यानी मेडिक्लेम जिसको हम बोलते हैं। थर्ड इज अ पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी, एक चाय का कप का जितना पैसा जाता है उससे कम में आता है। देन इज द ड्रेडेड डिजीज पॉलिसी, यानी कैंसर केयर एंड ऑल दोस, बिकॉज़ कैंसर इज ड्रेडेड डिजीज आजकल बहुत राइज पे। द फिफ्थ वन इज रिटायरमेंट प्लान। ये 5 चीज अगर आप इंश्योरेंस में खरीदोगे, लोगे, तो आई एम सर्टिफाइंग यू डोंट नीड एनीथिंग मोर, बिकॉज यू हैव टू मेक बेसिक प्रोविजन है सर। व्हाट इफ आई लिव टू लॉन्ग, व्हाट इफ आई लिव टू शॉर्ट, मनी इन केस ऑफ इमरजेंसीज, मनी फॉर स्पेशल ओकेजन्स, इतना ही है। टर्म इंश्योरेंस है, लिव टू लॉन्ग यू हैव अ एन्युटी प्लान, दैट्स अ रिटायरमेंट। In case of emergencies, you have mediclaim. For everything else, sir, we can, और जरूरी नहीं कि हर एक चीज हम इंश्योरेंस से ही सॉर्ट आउट करते। देयर आर अदर प्रोडक्ट्स आल्सो इन द मार्केट, लाइक आपका फिक्स डिपॉजिट्स है, आपका म्यूचुअल फंड्स है, शेयर्स है। एवरी इंस्ट्रूमेंट इज इंपॉर्टेंट। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि यही इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जरूरी है कि आप क्यों ले रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको भी मालूम होना चाहिए। और वो जानने के लिए आपको एक कंसल्टेंट लगता है, वो क्योंकि वो कंसल्टेंट आपके साथ बैठ के प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करता है। सो अगेन वी कम टू द सेम फर्स्ट पॉइंट, that problem identification is the basis of everything. अगर गोल सेटिंग नहीं है, मैं ये फलाना एफडी क्यों कर रहा हूँ, इसका जवाब अगर मेरे पास नहीं है तो वो मत करो, इट्स गोइंग टू बी अ वेस्ट। और अगर मैं ये पैसा साइड में रख रहा हूँ कि कुछ हो गया, मेरे बच्चे को एजुकेशन का है, मेरा, मुझे अगर रिटायरमेंट लेना है तो मेरे को इसके बाद देखना नहीं है, देन यू नीड दिस मनी, तो यू डोंट हैव टू टच इट बिकॉज यू हैव सम प्रॉब्लम। इट्स अ वेरी स्मॉल थॉट बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट कि आप छोटा छोटा चीजों के लिए वी जस्ट लिव आवर लाइफ, वी डोंट फोरसी एनीथिंग एल्स, देयर नो प्लानिंग। सो वो प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। आपने सर बात करते करते सब और बड़े बड़े चीजों को ना अच्छे कॉन्सेप्ट में बोला। एक आपने बोला पाप से डर, दूसरा आपने बोला एक लंच मेरे को खिलाओ इन अ मंथ, तीसरा बोला पंचशील। आई थिंक फैंटास्टिक। इससे याद भी मैं तो नहीं भूलूंगा, and all those who are watching you today, I am sure they will take this learning forever in their career ahead. मैं खुश हो जाएगा सर अगर ऐसा कोई लेता है तो। हाँ नहीं, हो जरूर होगा सर। और इसी पॉइंट पर सर मैं आपको थोड़ा और प्रेस करूंगा। I also know you had a big team of people whom you are managing, and बहुत से एडवाइजर स्ट्रगल करते हैं टीम मैनेजमेंट में। मतलब उनको टीम बिल्ड करना, टीम खड़ा करना और टीम मैनेज करना, रिक्रूटमेंट से लेकर उनको रिटेन करने में, अपग्रेड करने में, इसमें स्ट्रगल करते हैं। दैट इज वेयर उनका स्केल नहीं आता है बिजनेस का। सो कुछ टिप्स सर आप दे सकते हो कि हाउ टू एक्चुअली कीप योर टीम इंटैक्ट एंड गेट maximize the output from them. Sir, I am a very big fan of the Tata. Okay. ठीक है, मुझे बिजनेसमैन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अगर बनना ही चाहिए तो इंडस्ट्रियलिस्ट बनो, वो लॉजिक से मैं चलता हूँ। हमको रिच नहीं बनना, हमको रईस बनना। तो मेरा कभी भी थॉट प्रोसेस ये नहीं होता है कि उसके पास से मैं कितना निचोड़ू। आई मेक हिम अंडरस्टैंड यू विल रन एज मच यू वांट। ठीक है, एज एन एंटरप्रेन्योर आई वुड ऑलवेज वांट सर्टन माइलस्टोन्स टू बी अचीव, बट कोई रजनीकांत नहीं है ना हमारे पास कि कुछ भी अचीव करे। सुपर हीरो नहीं है सर। हमको वी हैव टू एक्सेप्टिंग एवरीबॉडी हैज, एंड क्योंकि मैं ये कर पाया तो कोई और भी करेगा। बंदा नया है तो वील हैव टू टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉय। आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ माय एम्प्लॉय, नंबर 1। ठीक है, आई हैव बीन ट्रेनिंग माय एम्प्लॉयज माई सेल्फ। देयर इज नो ट्रेनर इन दिस ऑफिस। मैं खुद मेरे बच्चों को सिखाता हूँ, खुद फील्ड पे भी जाता हूँ आज भी। सो इफ दे गेट स्टक,
आई एम देयर गाइड, मेरे को अभी भी बताओ क्या हो गया, मैं सिखाता हूँ ये प्रोडक्ट। और इफ यू आर एट द क्लाइंट प्लेस, यू गेट स्टक, इफ somebody your senior is no, sometimes happens, the team leader is somewhere else and it doesn't matter, don't worry, you can call me anytime, as long as I am awake I will reply, second third fourth। मैं सबको हायरिंग के वक्त ही बोल देता, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, आई मे मैसेज यू एनी टाइम, इट्स नॉट नेसेसरी यू नीड टू रिवर्ट, क्योंकि मेरे को उस वक्त याद आया तो मैं भूल जाएगा, उसके बदले में मैसेज डाल देता हूँ। तो समटाइम्स आई वेक अप एट 3 o'clock in the morning for a loo break, and then also I suddenly याद आया, अरे कल मेरे को याद दिलाओ, and I drop in the message. Similarly, vice versa also, you can drop me anything anytime. If I am awake, if I am reading it, the moment I read it, I will respond. So these are a few things that you have to be the coach of your own. Nobody knows this business. Now, for example, your business, nobody knows that business better than you know. Right, sir. आपने मार खाया है, आपने ठोकर खाया है, आपने बहुत नुकसान करके फिर वो नॉलेज आया है, जो मैं खरीद नहीं सकता है किधर जाकर, तो आप जो सिखाएंगे, और मैं कुछ भी मेरे पास रखता नहीं है, मेरे को जितना आता है वो मैं सब सिखाता है। वो मराठी में कहावत है, हाथ से राखून, मैं कुछ भी नहीं रखता है, मेरे को जो मालूम है वो सब जाओ ये भंडार, इधर मिस्टेक करो मेरे ऑफिस। The educator in you is still there and you will be there forever. मेरे साथ ही जाएगा वो, मेरे साथ ही जाना है उसको, मैं तो मेरे साथ ही जाना, क्योंकि अदरवाइज यू कैन नॉट मेक अ गुड टीम, ये इंपॉर्टेंट है उसको। अगर बिकॉज द फंडामेंटल बेसिस of this entire system is education, knowledge, अगर वही बंदे के पास नहीं है तो वो डीकोड टोटली बेच के आएगा ना। सही बात। बराबर है कि आज डॉक्टर हर एक को अलग अलग क्यों प्रिस्क्राइब करता है, बिकॉज उसको नॉलेज है कौन सा गोली किधर लाता है। हाँ सर, और सबको वही नहीं देता है वो। और हमारा घर में क्या होता है, ये खा लो गोली ठीक हो जाएगा, तो ये गलत है। सो दैट्स, एजुकेट योर टीम, बी विथ योर टीम, प्रोटेक्ट योर टीम, गाइड योर टीम, एंड like we keep on prospecting for clients, we also keep on prospecting for new freshers, fresher लेने का। बाकी तो मैं ये जो 5-6 साल करके आते हैं उनको बहुत ये रहता है, कब उनका एफटी रहता है। हाँ, तो मैं ये किया, मैं वो किया, वो बाहर रख के आओ मेरे ऑफिस के। एक ही आपने एक बहुत अच्छी बात बोला, डोंट बी देयर बॉस, बी देयर गाइड, मेंटर बनो, इम्पोर्टेंट है, और उनको प्रोटेक्ट करो। आपने बोला वो जो फीलिंग आता है ना कि माय बॉस इज देयर टू प्रोटेक्ट मी, नॉट टू जस्ट रेज हिज हैंड, अगर मेरे से कुछ गलती हो गया तो मेरे को कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, मेरे को सिर्फ डांट पड़ने वाली है, वो जो फीलिंग आता है प्रॉब्ली वो प्रोटेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट। आपने बहुत अच्छा वर्ड बोला, प्रोटेक्ट योर टीममेट्स, एंड आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सर ओवरऑल आप लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी करते हो, एंड लोन में आप एक्सपर्ट्स हो, राइट सर। हेल्थ इंश्योरेंस आपने बीच में थोड़ा बोला था कि हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट, जब आप 5 पंचशील के बारे में बात कर रहे थे। हेल्थ इंश्योरेंस, आई वांट यू टू थ्रो लिटिल मोर लाइट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप उनका फाइनेंशियल गोल्स को आप रिलेट करोगे हेल्थ इंश्योरेंस, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा? इट्स एज इंपॉर्टेंट एज अ टर्म प्लान, बिकॉज एज सेड, देखो जितना गारंटीड है किसी का मरना, उतना ही लगभग चांस है किसी का बीमार होना एंड हॉस्पिटलाइज होना। ठीक है, अच्छा, विल गो वन स्टेप अहेड। Hospitalization may not be only because of बीमारी, it could be also because of an accident or anything. देखिए आज इतना डिफिकल्ट सिनेरियो है, आपको लोग मरने नहीं देंगे, आप हॉस्पिटल में जाओ, they'll do whatever it takes to keep you alive. ठीक है, that is the advancement of medical science. जो पॉजिटिव साइड है उसके साथ नेगेटिव साइड भी है कि आपका बिल बहुत बढ़ जाता है। एंड देयर आर स्टिल फैमिलीज वो स्टक कि हमारे पास है मेडिक्लेम 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, अभी तो बाबा आजम के जमाने में लेके रखा होगा। सी, यू हैविंग अ मेडिक्लेम एंड हैविंग एडिक्वेट मेडिक्लेम आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, नंबर, एंड दैट इज हाउ व्हेन यू डू फाइनेंशियल प्लानिंग, आप जब आपके कंसल्टेंट के साथ बैठ के आपका पूरा नीड बेस्ड एनालिसिस करते हो, तब आपको समझ में आएगा कि आपका मेडिक्लेम यदि 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का है तो वो कैसे कम है और कितना मिनिमम होना चाहिए। वो आपका, इट में डिफर फ्रॉम यू टू मी, आई एम अ लिटिल ओबीस, सो मेरा रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा होगा मेरे, क्योंकि आपकी इनकम के हिसाब से भी होगा, बिकॉज आप उतना, दैट इज ऑल्सो देयर। सेकेंडली क्या हो जाता है कि आज की तारीख में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अच्छा फैसिलिटी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो नेचुरली पहले से था,
लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का चैलेंज क्या है कि उधर अपने को बेड ही नहीं मिलता है। तो अपने को फलाना डॉक्टर चाहिए तो वो उसी हॉस्पिटल में है और उधर ही जाके एडमिट होना, तो उसका तो पहले से बिल बहुत आता है। सो कैशलेस होना, स्मॉल स्मॉल थिंग्स पीपल डोंट नो, कैशलेस फैसिलिटी है, reimbursement facility है or whatever. You should know what your product is. That's one. Adequate insurance amount वो होना बहुत जरूरी है. If you don't know what is your adequate, you sit with your consultant and get it done. Right. Right. What is the adequate for me? इतना कम से कम हो. Now many a times husband has it, wife doesn't have it. ठीक है. So what are the provisions के हम उसको अपने प्लान में ले सकते हैं? बच्चा हो गया, उसको ऐड कभी कर सकते हैं, करना चाहिए, कभी करना चाहिए, कितना का करना चाहिए. डोंट लुक एट द प्रीमियम. बढ़ता है मेरा. जब कहावत है इंश्योरेंस में, व्हेन यू गेट इंश्योरेंस यू डोंट टेक इट, एंड व्हेन यू वांट इंश्योरेंस यू डोंट गेट इट. यस 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 यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर. अभी सर मैंने आपके सामने बोला है कि कैंसर का प्लान लेना जरूरी है. किसी को ना हो, लेकिन सब ऐसा गंदा बीमारी दुश्मन को ना हो. ठीक है. हम सुनते हैं किसी का हो गया फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, तो उस वक्त हम लोग बहुत ये रहते हैं, आज का आज जाके खरीदेंगे. ठीक है, ये चाहिए बाबा कवर, बहुत लफड़ा है. दूसरे दिन सुबह उठेंगे एंड इट्स गॉन. पीपल विल फॉरगेट. तभी सर रोज हॉस्पिटल में लेके खड़ा नहीं कर सकते ना आपको, कुछ तो आपका भी ओनस है. So insurance में, if you look at the statistics today about dreaded disease, 6.5 out of 10 are getting infected by such dreaded disease. आप सुनो, आपके लाइफ स्पैन में भी सुना होगा. क्या हमने पहले इतना बीमारी के बारे में सुना था? ये नहीं सर, नहीं. And it is not because somebody is drinking or somebody is smoking or somebody is doing anything. There are so many environmental issues also, political issues also. Yes. Food is not. There are so many things. Certain things are beyond your control. You cannot do anything about it. तो उसके वजह से भी आपको कैंसर हो सकता है या whatever dreaded disease हो सकता है. So you have to be prepared. The other day we were just sitting. हमारा एक कलीग है, उसके क्या बोलते हैं, उसका मौसी का हस्बैंड, मौसा, चाय पीते पीते उसको ब्रेन स्ट्रोक आ गया. अब ये किसके कंट्रोल में क्या है? चाय पीते पीते अगर उसको ब्रेन स्ट्रोक आ गया और वो गिर गया and he slips into coma for 7 days. Of course, he's recovered today by God's grace. God bless him with long life. But ये जो 7 दिन का कोमा और ये जो उसका हॉस्पिटलाइजेशन बिल शूटेड अप टू 12 लाख रुपीज सर. टोटल बाहर आने के बाद उसको 14 लाख रुपए बिल हुआ है. अब ये अगर 14 लाख रुपए उसके बाद अभी उसका डिस्चार्ज हो गया तो बिल तो भरना है. हॉस्पिटल कुछ छोड़ता नहीं है. थोड़ा इधर उधर का इन्फ्लुएंस हमने भी यूज किया तो 1-2 लाख रुपया कम किया. 12 लाख तो भरना है. मेडिक्लेम था इसलिए मैंने वो 3 लाख वाला बोला, क्योंकि मेरे दिमाग में वो फ्रेश था. 3 लाख रुपए का मेडिक्लेम विद बोनस उसका कोई 4.5 लाख रुपए हो गया. बाकी का भरना पड़ा अपने सेविंग से. सेविंग है ना, सेविंग से वाइट आउट. क्या करेंगे? अभी इतने सालों में आपने सेव किया था, वो एक छोटा बचत है, पैसा सोना गिरवी रखा. भी एक तो लोन सोने के अगेंस्ट गोल्ड लोन लिया, प्लस ये सब एफडी, म्यूचुअल फंड, ये वो भी था, सब निकल के, प्लस फैमिली बोरोइंग्स किया, प्लस ये किया, फ्रेंड बोरोइंग्स किया, और अभी उसका पैसा भरा. अभी वो इंसान क्या उतना स्ट्रेस वापस ले सकता है वो पैसा भरने का? क्या वो उसी जिल के साथ काम करेगा? वो ऑल दैट इज देयर. True, sir. True. In fact, at least people should think about all these factors, features while evaluate. Problem in India is, unfortunately, we don't evaluate the risk involved with our lives only. मेरे को कुछ नहीं होगा. And insurance का essence ही है. Insurance is like covering an eventuality. We are covering the uncertainty of life. And यही साला कोई मानने को तैयार नहीं है. Yes. प्रैक्टिकल होना पड़ेगा सर. I think everyone has to be practical. इसलिए सर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, what if I die? What if I live too short? What if I live too long? What if is there? हमको मालूम ही नहीं है क्या होने वाला है. तो उसके लिए प्रिपेयर करो. कुछ भी खरीदेंगे, लेकिन आईफोन खरीदेंगे 1.5 लाख रुपए का. यस यही बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकलिटी नहीं है बहुत बार. इसके लिए एडुकेशन विल एक्चुअली बी दी
की, और आप जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर जो एडुकेशन दे रहे हैं आज, ओके, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब ऑडियंस को कि लिसन टू प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड नॉट जस्ट इन्फ्लुएंसर्स, जो थोड़ा उनका वीडियोस बहुत अच्छा रहता है, दे आर वेरी गुड इन मेकिंग द वीडियोस एंड क्रिएटिंग कंटेंट, बट structurally the advice that comes from experience is much valued. I would request everyone to always go and talk to your consultants, okay, and आप नॉलेज ले लो, बट वेरीफाई कर लो, रीइंस्टेट कर लो, वो रीअश्योर कर लो नॉलेज, और उससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। सर ने जैसे एग्जैक्ट बोला कि एडुकेट इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस। अभी उन्होंने बोला इंश्योरेंस तो था, सब लोग उनके जो फैमिली मेंबर थे, दे हैड दैट थिंग इन देयर माइंड दैट मेरे पास इंश्योरेंस है 3 लाख का, but it was not educated. और अभी उसके बाद savings have gone, but they have also taken some loans. अभी उसका स्ट्रेस आगे तक चलेगा. Forget about your past money getting wiped out. Now in future also there would be some commitments to repay those loans. I mean, इसका सिंपल सॉल्यूशन होता है सर, 3 to 5% of your annual income में एडुकेट कवर आ जाता है. करेक्ट, करेक्ट सर. और बाकी 95% of the money you do whatever you want. You can actually मतलब एटलीस्ट द फर्स्ट स्टेप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस कवर करके रखो. आपके माध्यम में एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ. अपने पास कैसा होता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स, ये थंब रूल है. उल्टा करो सर, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस. पहला सेविंग या इन्वेस्टमेंट्स अपना पूरा करो, और जो बचता है पैसा वो उड़ाओ. पहला हमारे पास सैलरी आता है, हम प्लान करेंगे आउटिंग, हम प्लान करेंगे क्लबिंग. आज का ये जो नया जनरेशन है थोड़ा सा अभी is more into, and that's the age when you can actually get into insurance at a very low cost. And unfortunately parents भी उनको बोलते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स कभी सुनते नहीं है. ऐसा ही अगर अभी सोशल मीडिया के थ्रू अगर आता है ये ऑडियंस देखता है तो समझ में आएगा. This is with experience I'm saying. Now, if I go to take an insurance of my age, it will be 26,000, 28,000 for a term insurance of 1 crore. 10 साल 15 साल पहले मेरा टर्म इंश्योरेंस का वैल्यू मैंने जब निकाला है तो वो 8,000 रुपए है, और वो आपको और मैं 8,000 पूरा जिंदगी भर 8,000 ही भरने वाला हूँ उसका में, और पैसा उतना ही देने वाले हैं. अभी कभी ना कभी चलो, अभी मैं आई एम टेकिंग इट द अदर वे. सपोजिंग आई लिव टू 65 एंड आई डोंट डाई, एंड देन टर्म इंश्योरेंस का पैसा वेस्ट हो गया. सर मेरा 8,000 ही साल का वेस्ट हो गया. समझो 8,000 रुपया डिवाइड करो, 700 रुपया होता है. इससे तो ज्यादा मैं और आप खाने वाले हो कि नहीं? यस यस, एक लंच को अगर महीने में गए हम और आप, यस हो गया ना, जैसा आपने पहले बोला था, एक लंच. इसके लिए मैं बोलूँ मेरे को एक लंच खिलाओ, मैं आप उस लंच का पुण्य आपको ऐसा मिलेगा कि आपके बाद आपके परिवार को मैं 1 करोड़ देके जाऊंगा. ये चीज उनको समझना मांगते कि पहले हम लोग जो प्लान कर रहे हैं टुवर्ड्स आवर प्रोटेक्शन वी शुड सेंड, बिकॉज आवर इनकम इज जस्ट नॉट आवर इनकम, इट इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आज शायद नहीं होगा, बट इट इज अ फैमिली लाइफस्टाइल कॉस्ट. आज जो गाड़ी में हमारा फैमिली मेंबर घूमता है, या जो कंप्यूटर यूज करते हैं, जो मोबाइल यूज करते हैं, जो इंटरनेट घर में यूज करते हैं, वो सबका कीमत कोई तो बढ़ रहा है, और वो आप बढ़ रहे हैं. तो आपका गाड़ी साला 50 लाख का लेते हैं, लेकिन इंसान का वैल्यू उससे कहीं ज्यादा है. वो गाड़ी शोरूम के बाहर निकलने के पहले बोलेंगे ना 50 लाख का इंश्योरेंस करो. अगर समझो एक मर्सिडीज है, वो बोलेंगे क्या बाहर निकलने के पहले, क्या आप 800 भी ले लो, मारुति 800, कोई भी गाड़ी, बाइक ले लो, उसका इंश्योरेंस पहला आएगा. वो बाइक चलाने वाले का इंश्योरेंस नहीं है. वो जो ट्रैफिक पुलिस वाला भी पकड़ता है तो वो उसको भी बोलना, गवर्नमेंट शुड मेक इट कंपलसरी ना. इंश्योरेंस जैसा बाइक का कंपलसरी है, वो सिटी मार के बोले तुम्हारा भी दिखाओ. ये बहुत बहुत लाउड थॉट है सर. आई थिंक ये सही है. जैसे गाड़ी जब शोरूम से बाहर निकलता है तब इंश्योरेंस चाहिए, वैसे इंसान जब बाहर निकलता है तब you need a driving license to drive your car. No, you also need an insurance now. ये कंपलसरी करना मांगता है. तभी I think that's a fantastic thought, sir. Okay, क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था. You belong to Bombay. Bombay is the financial capital of India. Things are very different in Bombay compared to the other parts of of our country. वहाँ पर to be a financial advisor, you really have to be on your toes, because customers there also are at a different level. Okay, वहाँ पर competition भी ज्यादा है. कस्टमर का expectation, knowledge, speed of life, बहुत things are different. So कुछ ऐसे tips, sir, that some things that you would like to share from the busy and the hustling, bustling life of Mumbai. So I have been fortunate enough that I don't have to travel much. So I get a lot of time to attend online courses, read online, read books. So I stay in that part of the city where
माई ऑफिस इज जस्ट 5 minutes फ्रॉम माई होम, सो आई और वो भी मैं कभी कभी बाइक पे जाता हूँ, घर पे चल के भी नहीं जाता हूँ, तो आई रियली रीच वेरी फास्ट एट होम. But to everybody else who's use the travel time to read something in the train, or no, the first important part is that you have to be updated with whatever is new is coming. अभी ये बोलने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके न्यूज़पेपर पढ़ो, मैं ये सब नहीं प्रमोट करता हूँ. मैं मेरे को सिंपल देर आर लॉट ऑफ ज्ञान टुडे अवेलेबल ऑन इंटरनेट फ्री ऑफ, पैसा भर के भी लेना जरूरी नहीं है. कुछ भी टॉपिक डालो आप, यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब. जस्ट डोंट लुक एट वन वीडियो. एक गुरु बनाओ कोई, तो एक वीडियो आप देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, देन यू विल गेट अंडरस्टैंड कि मोर और लेस दिस इज व्हाट एवरीबॉडी इज टॉकिंग द सेम. सो दैट्स ग्रुप बनाओ. Yeah, so discuss with somebody some new ideas with your fellow advisors in your town or in your area or whoever. Maybe you are going to some branch. Every insurance company also not today trains. Attend those trains. अभी क्या होता है, अपने को 100 रुपए भी खर्चा नहीं करने का रहता है, अपने को ट्रैवल भी नहीं करने का रहता है. और ऐसा तो फिर मराठी में कहावत है, असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी. तो ऐसा अभी वो जमाना रहा नहीं. तो अगर मेरा हरि भगवान किधर तो है, मेरे को तो खाट पे लाके देगा, तो ऐसा भी नहीं है. So you have to put in effort, you have to be updated, you have to talk to people, or it's okay to not know something. I was more asking you from the point of view, sir, of other advisors, who are not facing fierce competition, okay, from professional, because Bombay में तो बहुत मैं जानता हूँ कि there is enough competition and customers have professional choices also. ओके, बहुत से मार्केट में क्या हो रहा है कि उधर प्रोफेशनल चॉइस नहीं है, तो एक एडवाइजर का अच्छा चल रहा है, एंड दैट पर्सन हैज नॉट इवन इज क्वाइट रिलैक्स्ड देयर. ऐसा बॉम्बे में तो है नहीं. बॉम्बे में तो कंपटीशन बहुत है. सो आई बेसिकली वांट यू टू tell some things for those advisors, when make them aware that at some point of time competition will come and you need to do few things to be ready for that competition. अगर कंपटीशन नहीं है तो धंधा भी नहीं है, ये चीज याद. जब भी कंपटीशन होगा तभी धंधा होगा. सेकेंडली, क्रिएट अ सेंस ऑफ योर ओन वैल्यू एडिशन पॉइंट्स. जब किसी को समझेगा कि आप ये करते हो और उसके वजह से ये हो गया, तब लोग आपके पास खींच के आएंगे. इन टुडे ऑल्सो व्हेन आई सिट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, वी मेक इट वेरी क्लियर कि इक्वल टोटल नहीं बेचना है. अब किसी भी इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ हम पहला क्लाइंट के साथ we'll first do a need-based analysis and then only give the product. ठीक है. Again, as I said, we have if somebody is keen, नहीं मेरे को ये ULP चाहिए, so then we have no control. But as long as possible, as far as possible, I will first tell him, this is what the benefits are. There are some people who say कि नहीं सर, मेरे को ये नहीं जम रहा है टर्म प्लान, मेरे को आप ये दे दो, अगर मेरे को मांगता है पैसा तो I should get it and all of that. So it's okay. That's a personal choice. That's a personal thought process. That's a personal need, I say now. लेकिन अगर आपको competition आएगा तो you have to stand out in the competition, and only when you do certain use of such tools and such knowledge base, only then you can stand out in this competition. So आपको ऐसे चीजों को करना चाहिए, ऐसे tools को use करना चाहिए जो आपको इस पूरी सिस्टम में अलग स्टैंड आउट करेगा और कंपटीशन में सर्वाइव करेगा. बेसिकली आप बोल रहे हो एडवाइजर को कि आपको अपना स्किल सेट ट्रेनिंग करके अपग्रेड करना है, पर टूल सेट आपको बड़ा ग्रो एक्वायर करके उसको रेडी होना चाहिए. सर, अगर मान के चलिए कि आप उस जोन में हैं जहाँ पे आपको कंपटीशन नहीं है और फिर भी आप ये इनोवेशन के साथ अगर सोल्यूशन डिलीवर कर रहे हो, तो यू आर वे अहेड इन ऑलरेडी फ्रॉम द कंपटीशन. You set a benchmark. Don't wait for things to become difficult. Why do you have to wait for then look at some solutions. अभी immediately आप अपग्रेड कर लो, जो आगे का चीज है उसके लिए आप रेडी हो जाओ. बेंचमार्क नो फॉर अदर्स कि साला ये नहीं है तो मैं इस फील्ड में नहीं आ सकता है. Fantastic. In fact, sir, everything that you have spoken today, एक बात आपने commonly बोली, and that I should appreciate to you for that. आपने वापस से बोला कि गोल प्लानिंग, उसका नीड एनालिसिस, बंदे का गोल समझो और फिर सॉल्यूशन दे दो, सिर्फ डी कोड मत दे दो. आपने वापस और डी कोड के एग्जांपल से बोला. आई थिंक that's the biggest highlight of today's conversation, I feel. और ऑफ कोर्स आपने पाप से डर, वो सेल्स प्रोसेस के बारे में आपने जो बात किया है ना, आई स्ट्रांगली फील सेल्स प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट. प्रोसेस हैज टू बी देयर. Without process, scale doesn't come. So ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत वैल्यूएबल चीज आपने बोला. पाप से डर, वो डी कोड का एग्जांपल जो आपने दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. आपने हेल्थ का बोला कि
हैविंग अ कवर और एडुकेट कवर में फर्क है. ये छोटी छोटी चीजें है, बट इसका इम्पैक्ट सर बहुत डीप है. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड that in today's conversation, you spoke something that will impact, it has impacted me a lot. And I'm sure it will also impact your followers and also will impact advisors who are watching. And probably आपने एक उनको चीज सिखाई है, which I want to stress upon, the goal based, need based selling करो, solution based selling करो. And I think that's a biggest tip. और रेडी हो जाओ. अभी आपने अभी भी बोला कि रेडी हो जाओ फॉर द फ्यूचर. डोंट वेट, डोंट गेट दैट Don't wait. हायर लेवल. Yes. Yes, thank you so much sir. I think it's a pleasure to interact with you. It's a quite a long time that we are interacting, and ऐसे ही वक्त निकल गया. I am very happy that you accepted our invitation to come on our show, and The you pleasure is added mine. wholeheartedly. आपने पूरा wholeheartedly बिंदास, बॉम्बे की भाषा में बोलूं तो बिंदास होकर एडवाइस दिया. एंड आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर फॉर दैट. एंड ऑल द बेस्ट टू यू. ओके, Thank you very much. and have a It is successful. always a pleasure interacting with you. Sir, And it is my pleasure. It is my pleasure. I am always there. If anybody needs my help anytime, you can always Yes share sir. my Yes contact sir. details also. So I'll be Yes. always available Yes. to help. अगर मैं as I Yes. said Yes. Yes. in the podcast also कि अगर मैं Yes. जवाब नहीं दिया तो मैं जवाब देगा. जब भी मैं देखूं Yes. तब जवाब देगा. But I will answer. Yes, in fact, I will tell my our audience here that sir's details, especially अगर आपको क्रेडिट, आपका मैनेजमेंट, क्रेडिट स्कोर मैनेजमेंट करना है, इफ यू उन्होंने जैसे बोला क्रेडिट रिपेयर सर्विसेज, स्पेशल टर्म उसके लिए उन्होंने यूज किया. इफ एट ऑल यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइस, अ प्रॉपर गोल बेस्ड एडवाइस, my sir का contact is there in the YouTube video or description that we have today for today's video, and I'm sure he will add immense value to you. Okay, and thank you for watching it, our show today. And sir, thank you for joining us. It's a great My pleasure. pleasure. Thank you, sir. Thank you.